हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन वाई। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इस चैनल में हम बात करते हैं बेसिकली एक मेडिकल कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हम बहुत से टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि नीट यूजी के लिए यूजफुल है, नीट पीजी के लिए यूजफुल है। हम इस चैनल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के आने की कोशिश करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे इस चैनल के पीछे का, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट की पहले पोस्ट करूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट मी नो मोर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल start this video. So in this video we will talk about enzyme and its classification है कि enzymes क्या होते हैं, उसकी classification। सो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर, अबाउट द कोफैक्टर्स। हम होलो एंजाइम्स और एपोएंजाइम्स का डिफरेंस देखेंगे। हम एंजाइम्स का नोमेक्लेचर पढ़ेंगे। हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं। सो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम्स एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर वो 10 सेकेंड में होनी होती है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम वो जल्दी हो सकती है। सो एंजाइम्स आर द थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। They are basically enzymes are basically the protein structure. They are the three-dimensional globular protein that can be tertiary or quaternary structure. So some special RNA species also act as an enzyme and are called ribosome. So जो RNA की कुछ species होती है वो भी एक enzyme की तरह act करती है और किसी भी reaction का rate बढ़ा सकती है, और उन special types के RNA को हम कहते हैं ribozymes. जैसे कि ribozymes का example है hammerhead ribozyme. Next we will talk about the structure of enzymes. Structure of enzymes. एंजाइम्स के पास एक स्पेशल तरह की साइट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक तरह का रीजन है जो कि बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ, कोफैक्टर के साथ या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ और उसको होल्ड करता है। और एक्टिव साइट पूरे एंजाइम की लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया कवर करता है। और इस एक्टिव साइट के पास एक स्पेशल तरह की शेप होती है क्योंकि इसके पास टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है। सो एक्टिव साइट बेसिकली क्या होती है, जो एरिया जिसके साथ कोफैक्टर, सबस्ट्रेट या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप आके अटैच हो, और ये हमारे एंजाइम की लेस देन 5% ऑफ द टोटल एरिया कवर करता है। और ये मेड अप होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन से। सो एक्टिव साइट की भी दो साइड्स होती है, पहली बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो चूज करती है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना और उसको एक्टिवेट करना, और दूसरी तरफ कैटालिटिक साइट जो होती है वो सारी कैटालिटिक एक्शंस ऑफ द एंजाइम शो करती है। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर एक तरह के नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, जो रिएक्शंस 20 अमीनो एसिड नहीं करा पाते। अमीनो एसिड एक तरह के प्रोटीन्स हो गए, तो जो प्रोटीन्स नहीं करा सकते वो कोफैक्टर्स कराते हैं क्योंकि दे आर द नॉन प्रोटीन्स। तो कोफैक्टर्स के भी दो टाइप है, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। Organic ones are basically made of the organic molecule, that is obviously, and inorganic are made up of an inorganic molecule, that is obviously. So organic का example जैसे कि glycogen phosphorylase that requires small organic molecule pyridoxal phosphate. Inorganic का example है enzyme carbonic anhydrase that requires Zn plus 2 for its activity. Hexokinase has cofactor as an Mg+2. तो अब हम बात करेंगे एपोएंजाइम्स और होलोएंजाइम्स। बेसिकली हम इनका डिफरेंस देखेंगे और इनका कोरिलेशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपोएंजाइम, these are the enzyme that requires a cofactor but does not have, and an apoenzyme is inactive enzyme, ये inactive होता है, and activation of the enzymes occurs upon the binding of an organic or inorganic cofactor. So basically apoenzyme एक तरह का एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिव स्टेट में होता है और उसको कोई भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर चाहिए एक्टिव स्टेट में आने के लिए। नाउ वी विल सी होलोएंजाइम। होलोएंजाइम इज अ कंप्लीट functional enzyme which is catalytically active. Holoenzyme consists of an apoenzyme together with its cofactor
And holoenzymes contains all the subunits required for the functioning of an enzyme. Example, DNA polymerase III, RNA polymerase. तो holoenzyme एक तरह का एंजाइम होता है जो कि एक्टिव स्टेट में होता है. इट कंटेन्स बोथ apoenzyme and a cofactor. तो इनका रिलेशन क्या हुआ? apoenzyme जब कोफैक्टर से मिल जाता है तो वो बनाता है holoenzyme. apoenzyme क्या हुआ? हमारी इनएक्टिव स्टेट हुआ. कोफैक्टर या तो हमारा ऑर्गेनिक हुआ या फिर इनऑर्गेनिक हुआ. तो ये बनाते हैं holoenzyme जो कि फंक्शनली फुली एक्टिव होता है. फॉर एग्जाम्पल DNA polymerase III और RNA polymerase. Now we will see the nomenclature of the enzymes. Basically enzymes को नेम करने का तरीका. So enzymes is named according to the name of the substrate it catalyze. यानी कि enzymes को हम उसी बेसिस पे नेम करते हैं जो सबस्ट्रेट को वो कैटलाइज करता है. Or by adding the suffix "ase" at the end of the name, substrate enzymes are named. So basically हम enzymes का नाम बनाने के लिए जो substrate को वो catalyze करेगा उसी substrate के name के आगे हम "ase" attach कर देते हैं. For example, for catalyzing the hydrolases, it is termed as hydrolase. For lactose, it is lactase. For maltose, it is maltase. And some enzymes were named before the systemic name form. So nomenclature को establish होने से पहले भी कुछ enzymes discover कर लिए गए थे. तो उस समय तक तो nomenclature आए नहीं थे तो हमने उसको already name दे दिया. For example, some enzymes like pepsin, trypsin and renin. They are also a types of enzymes. Now we will look at some example of this nomenclature. For example, substrate we have lactose. Enzyme is lactate, so it will form glucose plus galactose. For the maltose we have maltase that will form glucose. For cellulose we have cellulase, lipids we have lipase, starch we have amylase, for the protein we have protease. Now we will look at the classification of the enzyme, यानी कि enzymes के types. So a systemic classification of the enzymes have been developed by the International Enzyme Commission. So International Enzyme Commission ने ये classification of the enzymes हमें दी और ये worldwide follow भी होती है. And this classification is based on the type of the reaction catalyzed by the enzyme. इस क्लासिफिकेशन का बेसिक्स है हमारा बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम देता है. एंड देयर आर बेसिकली 6 मेजर क्लास ऑफ द enzymes and each class is further divided into subclasses, subclasses and so on to describe a huge number of different enzyme catalyzed reactions. So major हमारे पास 6 major classes होती है enzymes की. पहला है oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. So हम एक तरह से पहले एक overview लेते हैं सभी enzymes classification का. Then we will talk deep about each and every enzyme type. So first if we talk about the oxidoreductase, we इनका नेचर होता है ये ऑक्सीडेशन करती है एंड रिडक्शन करती है. इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफेरेजेस, ये नाम से ही जब ट्रांसफर आ गया तो ये ग्रुप का ट्रांसफर करेगी. हाइड्रोलेज, हाइड्रो मीन्स दैट वाटर ग्रुप. एंड आप सभी को पता है जैसे कि जहां भी वाटर का प्रेजेंस मिलता है वहां पे बॉन्ड ब्रेकेज जरूर देखा जाता है. सो इट इज अ क्लीवेज यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस दैट इज एडिंग ऑफ द वाटर. Now we will take lyases, that is non-hydrolytic cleavage of the chemical bond. Lyases भी cleavage होता है पर इसमें water यूज ना होकर कुछ और यूज होता है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में. बट lyases भी एक तरह का ब्रेकेज है. Now it is isomerases. It is the isomeration of the substrate into the structure or optical isomers. इस एंजाइम्स के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं यानी कि उसको स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं सेम मॉलिक्यूल का विदाउट एडिंग और विदाउट द क्लीवेज. नेक्स्ट इज लाइगेजेस. लाइगेजेस नाम से हमें पता है जॉइनिंग. जहां भी जॉइनिंग आता है वहां हमारे पास एक वर्ड आता है एटीपी. एटीपी किसी भी जॉइनिंग में काम आता है. सो इट इज अ जॉइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड. सो इनको याद करने का भी तरीका है जैसे कि ऑक्सीडोरेडक्टेज का O, ट्रांसफेरेजेस का T, इसका H, L, I, N, that is oath hill. बस L और I का ऊपर नीचे है वरना oath hill तो बनी रहेगी. So now let us talk about the oxidoreductase. तो इसके नाम में पता चल रहा है ऑक्सीडो यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन. तो इस enzymes की basically दो properties है oxidation and reduction. So it is also known as dehydrogenases and or oxidases. So that catalyzes the removal of hydrogen atom. That means ये हाइड्रोजन एटम का रिमूवल कराती है एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंपाउंड दे एक्ट. सो बेसिकली रिमूव करती है हाइड्रोजन एटम को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सबस्ट्रेट में से. And the substances called coenzymes associated with the oxidoreductase enzyme
and R for the activity except the hydrogen and electron which is in metabolic system of animals and eventually were transferred to the oxygen. So other enzymes of this group catalyze such reactions such as oxidation of the aldehyde. ये oxidation of the aldehydes करता है और ketones का oxidation करता है to the carboxylic acid and the dehydrogenation of the amino acid. So oxidoreductases की दो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन करना और रिडक्शन करना. इसके दो एग्जांपल हैं कि dehydrogenases that is removal of the hydrogen, oxidases that is adding of the oxygen to the hydrogen forming the water. यानी अगर ये डिहाइड्रोजनेज है तो ये रिमूवल करेगा हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीडेज है तो ये ऐड करेगा ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से जिससे ये वाटर फॉर्म करेंगे. एज यू कैन सी इन द रिएक्शन दैट द इथेनॉल on the removal of the hydrogen atom from the acetaldehyde and it is a oxidoreductase reaction and you can see that lactate on removal of the hydrogen will form pyruvate and this is under the lactate dehydrogenase enzyme. Now we will talk about the transferases enzyme. These are the enzymes that has more than 450 enzymes as a subtype. इस transferases में more than 450 enzymes हैं जो कि catalyze करते हैं. इसके name में ही है transfer यानी कि it will catalyze the transfer of the various group other than the hydrogen. हाइड्रोजन को छोड़ के बहुत से ग्रुप का ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपाउंड टू दी अनदर यानी कि ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी केमिकल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में. फॉर एग्जांपल द कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू एन अल्फा कीटो एसिड यानी कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे कीटो एसिड में. So the general reaction for transferases is like AX plus B is equals to BX plus A यानी कि X ग्रुप का ट्रांसफर होगा B ग्रुप के साथ. For example, we have transferases as transamine that is transfer of the amino group from one molecule to the other. As you can see, this amino group is being transferred here to this compound. And we have phosphotransferase that is transfer of the phosphate group that you can see that this phosphate group is transferred to this. Third, we will see the hydrolases. As you can see in the name, we have hydro, that is water. And wherever we heard water, we should remind of the cleavage or the break. So these have more than 200 enzymes that catalyzes the hydrolysis of the several types of the compound. यानी कि breakage of the several compounds. For example, esterases include lypases, which breaks the ester bond between the carboxylic acid and alcohol. We have the peptidase, which hydrolyze the peptide bond between the carboxylic acid of one amino acid and the amino group of another. So for this hydrolysis, we have a general reaction like AX plus water will give us X plus OH and AH. That means H will be break down that H will go with A and OH will go with X forming the XOH and AH. For example, we have the maltase that is breaking off the maltose into two glucose. As you can see, this is maltase that will be broken down forming the two glucose. And we have the lipase that is in which the lipids are broken into fatty acids and glycerol. So we have lipid that is broken into glycerol and fatty acids. Now we will see lyases. So lyases एक तरह के members होते हैं enzymes के जो catalyze करते हैं addition या फिर removal of the element of the water that is hydrogen or oxygen, ammonia और carbon dioxide. So basically lyases या तो addition करेंगे या फिर removal करेंगे water के elements का basically hydrogen, oxygen, ammonia के element का जैसे nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, carbon और oxygen at a double bond. So ये किसी भी double bond पे ऐड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल या फिर अमोनिया के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के. फॉर एग्जांपल decarboxylases remove the carbon dioxide from the amino acid and dehydrates removes the water. So let's look at the example. So if we have the example like decarboxylases that is removal of the carboxyl group from the respiratory substrate to the carbon dioxide to release carbon dioxide. Number 5, we have the isomerases. So in this, the enzyme that catalyzes the reaction involves structural rearrangement of the molecule. So ये enzyme basically structural rearrangement करता है molecules का. Like for example, alanine racemase
For example, catalyzes the conversion of the L-alanine into its isomeric mirror image form D-alanine. So as you can see in the picture, we have the rearrangement of the true structure like dihydroxytone phosphate into glyceraldehyde 3-phos. So isomerases का function होता है किसी molecule का rearrangement करना. Sixth we have the ligases. So नाम से ही पता चल रहा है ligases है तो किसी भी two molecules का joining होगा. Ligases are also known as synthetase. So it is a class of 50 enzymes that catalyze the reaction involving the conversion of a chemical energy and provide a couple between energy, demanding the synthetic process energy yielding breakdown reaction. So ये basically two compounds को join करता है through the chemical energy through ATP यानी कि they catalyzing the joining of two molecules deriving the needed energy from the cleavage of an energy-rich phosphate bond in many cases by simultaneous conversion of the ATP to ADP. यहाँ से वो chemical energy आती है. So let us look at the example. Like in this example, we have DNA synthetase. So you can see the joining of the two groups. So thank you everyone for watching the whole video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द मोर फ्यूचर अपलोड एंड